Again, good morning to all of you. Today we will be starting the discussion on macroeconomics, and I will introduce macroeconomics for you as a base for finance. The purpose of macroeconomics discussion today will be just to talk about various aspects of macroeconomics, why macroeconomics, how it is different from microeconomics, and how it is important for managerial decisions. Economics is at two different levels, one at the unit level, that is called microeconomics, and another at the aggregate level, that is called macroeconomics. Aggregate could be industry, aggregate could be sector, aggregate could be the complete market, which may be domestic or international, global, at national level and global level, both the levels we are going to discuss. First of all, why macroeconomics? What is the reason why we need macroeconomics? Reason is very simple, that macroeconomics is the set environment of an economy at macro level, which influences the activity within that economy. So, the different economic aspects which is there, now it has got two important parts. First is economy itself as a large economic part and its impact. So, I will show you a very simple exercise why macroeconomic happenings is important for you and how you should focus. Whenever we use the word economics, it is a subject which study about economy. So, ultimately we have to study economy. Word is economy. Economy, it has got certain attributes. The way in political science we use word country, exactly word economy is here. So, economy means that country, and how country is identified? Through its boundary. It has got geographical boundary very clearly, that this is the boundary of a country. It has got its identity in political science, it is through flag of that country. Through flag you can say, oh, this is the country. What is the another dimension of country? It has got sovereignty, right to take decision, that is again a very important part. All these attributes will be in economy. So, economy is also that country, and it is identified through its own boundary, that is same geographical political boundary. It is identified with the same flag, it has got its own sovereignty, and one additional feature also is there in the economy, that is it has got its own currency also. Currency is also very important, right. So, that is the economy. Now, you can use with the name, say Indian economy, US economy, European economy, German economy, Japanese economy. Now, understand that we are using actually a country, we are referring country. Could be used, they can use subject to that, but ultimately they are then in that case they have to depend on other countries' currency. Sometimes there could be combination of countries using single currency like European Union, it could be there, that is little an advanced stage, why they are taking this advantage, and so, but ultimately identity is always there with the currency, right. Now, what this economy is important for us and why this is important, what are the various dimensions. So, understand the need first. We have to understand the operation of a company. Our purpose is very clear. We have to understand operation of a company. What this company is,
Company is working in an industry. So, there is industry. And the moment we talk about industry, so many players must be there, so many companies must be there in that industry, right. And this industry is actually working under the basket of economy. In an economy, so many industry could be there. And to more extent, now our purpose is complete through this EIC level. EIC stands for economy, industry and company, EIC level. But we can further create a jacket, and that jacket is global economy, because our economy is also part of the global economy. Any country and every country has got some relation with others, and that is what we say. Here you will find out now global economy, then you can call it here domestic economy, then your industry, and then your company. And this company may be playing in global environment also. This is the way it is happening. Global environment also they play with. So, ultimate objective is I am working in this company where company has to perform, right. But performing in which environment? In that industry, which is a part of economy, which is a part of global economy. Here when we say domestic economy, I am more concerned with Indian economy by default, but it could be any economy. For American it could be US economy, for Japanese it could be Japanese economy, for Chinese it could be Chinese economy, and I do not mind it. Every country person should have their own respective economic way to think, and they should look for their own development. Now, when we consider these economic aspects, how it is going to affect? So, level will be, you can discuss between global economy and your national economy, there is interaction. So, 3 levels are there: global economy, your domestic economy, and interplay between these two economy. How much you are related to these economy, degree of relationship also is very important. And we all know it is not basically confined to one economy, it could be for many economies. We say we have got a comparatively better relationship with Japan, but not with the Turkey, right. So, there are always one word which we will be using, and that word is called ROW, rest of world, economy, rest of world. That relationship has to be counted. Then next one important point further, this economy and industry has got interplay. Some economy, especially in that economy, particular industry is highly flourishing. That industry has got a good relationship, maybe positive impact, negative impact, that impact also has to be viewed. And then industry and company relationship is also there. Everyone may not be necessarily performing at par in that industry. So, this entire relationship has to be viewed. We have to study basically the attributes or features of economy at aggregate level. And the moment we have to study this feature of economy, especially to Indian economy, means all within, whether it is industry or company, everything get covered under that. These are the relationships we have to study. So, where we are is clear now. Why we say macro? Macro means it is aggregate. Aggregate means all these industries aggregate has to be there. Everyone's performance is going to get counted in that economy. When we say Indian economy, means it is not Indian in a hotel industry, it is not Indian software company, it is not Indian service sectors, it is Indian manufacturing. The entire total is, sum total of that economy is ultimately making Indian economy. All right. Now, for ease of understanding, it is needed we should have some analogy compared to an individual, then to a family, society, and then finally nation.
Now, every individual has got income starting from 0 to many. No income means 0, and it could be any income, any level. So, an individual can have, I have got an income. Similarly, every family has got income. Sometimes only one person is earning member in the family. So, one person's income is a family's income. Sometimes other people are also there, or through other sources income can come, that adds to family income, right or not? Yes, so, income, family income may be equal to individual income or maybe more than individual income, but ultimately family income is the sum of the total income of that family, from direct earning or indirect earning. What is direct earning? Family members are earning, both wife, husband, brother, sister, parents, everyone is earning. So, everyone's income becomes a income of that family. Direct income is there. Not only that, they have created asset residing in one floor, 2 floors are rented, rental income is also coming. Have already deposit good FD amount or invested in the market, that income will also be coming up, keep on coming. So many incomes can come. So, whatever the sources of income is there, those income you can count, all incomes are there. Similarly, country also has got income. So, who is country? Who is this economy? It is everyone we who are citizen of this country are actually making the economy of this country, right. I am coming here in addition to my normal 5 days week job, 6 days, 7 days I am working here. Of course, some earning is also there. This earning is ultimately my income, but this my income is added to the income of nation also. That is a simple calculation. So, everybody is contributing, ultimately nation is made. I say India has got these many cars, or even Delhi has got these many cars. Actually, is it a Delhi government's car or Delhi's car, or it is some Delhi's resident's car, resident cars. So, we are all individuals who are there in that economy, who are making this economy, and that is why macroeconomy is also called as aggregate economy. And that is why you will come across, when the chapter will discuss about demand and supply, it will be aggregate demand, aggregate supply. It is immaterial which company's product you are buying and who is buying. Ultimately, it is a say watch. It is not that whether it is Rolex watch or HTM watch or Titan watch or Cisco watch. I do not know. It is a watch purchase, watch market is there. Which restaurant is getting income is not important, restaurant income is important. How much restaurant income is there? So, exactly that is aggregate. Recently, Prime Minister has congratulated entire nation for having a wonderful achievement of export value, and that export value ultimately has indicated we have really made a landmark in export. Now, it is not export of one product. So many exports has been there, so many items has been we are exporting. So, whenever you study on aggregate level, it is macroeconomics. Any attribute of economics, any attribute, income is one example. It may be your trade, it may be your cost of production, it may be your market, anything you consider, you will find out it is, you have to count in total. So, one by one we will understand this economy, macroeconomics, and you all are a student of finance, which will be your main core. After second semester, you will come across with actual subject of finance, where you will not only get thrilled, you will enjoy study, but subject to that your foundation is strong. This first 2 semesters which has been there, you have understood it effectively, and economics is going to play a very key role. Entire rest of the finance will be based on this paper. So, this paper is important.
deliberately I took this paper to have few interaction with you. Reason was very clear. I will make you clear why this paper. If you do not understand this relationship, in future finance will be just one subject for you, like Sanskrit or Urdu or Hindi, and I do not want to see that you should read finance like any other subject. You understand, appreciate that finance. Some of the topics are really very relevant. So, how that economy, so this is one EIC frame is important, and for understanding the company's performance or industry performance, economy has to be known. When we say economy, one important parameter of economy is policy, rule regulation, guidelines. Two important policy frames have got major component in our study, and that is called fiscal policy and monetary policy. Policy is nothing but it is the guideline through which you have to act, behave. Other policies are also there, but prime two policies are important, fiscal and monetary, how you are going to work upon. Then another dimension of this, are we really isolated, working independent, without any relation with others? Says no. We have relationship with others, and one way or two way relationship could be there. India has got one way relationship with the rest of the world or two way relationship? Two way relationship. Why we have that two way relationship? Satisfaction create करो, satisfy हो जाओगे. करना ही पड़ेगा. Means you say you are not self sufficient. Okay, something you may be producing more, so you will like to sell to others, and something you may be not having will like to take from others. Export and import. Yes, export and import, very right. Export and import, we are talking that only. Okay, we have to have export and we have to have import. अच्छा, ज़्यादा import होगा तो क्या दिक्कत है? फॉरेन करेंसी कम होगी, हमारी बाहर जाएगी, नहीं जाना चाहिए, जानी चाहिए. It should be in a balanced way. Okay, it's अच्छा, एक्सपोर्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा. Anyway, दिल मांगे more, that's good. Export is good, but now question is export, तो who stops you in exporting more? ओ, तो आप तो फिर मुझे वो गोल चक्कर में घुमा रहे हो, रिसोर्स नहीं है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना भी चाहिए. करो ना, किसने मना किया है? तो should I accept that we will never be able to make more export? PPC क्या होता है? कर्व. तो कर्व तो बनता है. Manufacturing, that is increase the GDP so that I could export better, but it's like other countries do not want every country to be the. Excuse me, please. Yeah. So most of the countries don't want कि हमारी country export करे ज़्यादा, because अगर वो ज़्यादा import करेंगे, हमारी currency ज़्यादा अगर market. So basically you are not talking about global competition. Yes. Okay, वो तो है फिर, लेकिन करना तो पड़ेगा ना. करना तो पड़ेगा. If we keep on saying that, okay, Japan has got more resources or India has got more resources? India has got more resources. Who is more exporting? Japan is more exporting or India is more exporting? तो इसका मतलब resource is not the real factor for it. उनके यहाँ क्या ज़्यादा better है? Human capital resource is better. हम भी तो वही try कर रहे हैं कि आप human capital resource better हो. See, first thing is I'm trying to devast the myth. My friend said that कि no, सर resources हमारे पास नहीं है तो हम ज़्यादा export नहीं कर सकते हैं. जापान बेस्ट एग्जाम्पल है, रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा नहीं है उनके पास, फिर भी वो नेट एक्सपोर्टर रहे हैं. Yes or not?
हम अपने प्लेस पे अपना मेट्रो नहीं बना पाते, वो आके हमारे यहाँ भी बना के दिखा देते हैं कि देखो मेट्रो ऐसे चलता है। और वेरी इंटरेस्टिंगली माइंडसेट भी चेंज कर देते हैं। आप यहाँ पे निकलोगे, खैर वॉशरूम की चर्चा नहीं करेंगे अभी, वो आप जानते हो सब। आप यहाँ पे अपना रैपर फेंकते हुए आपको हिचक नहीं होगी, साइड में गिराते चले जाओगे। मेट्रो में, इसी कंट्री में, इसी सिटी में, इसी 1 किलोमीटर की दूरी पे मेट्रो में आप ये काम नहीं करते हो, क्योंकि वो जापानीज मेंटेन करते हैं और वो बड़े क्लियर हैं इस मामले में। नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट वे कि वहाँ तो आपको वो नहीं, वहाँ मालूम है पेनल्टी लग जाएगी, फाइन लग जाएगा। आपकी कंट्री में आके, आपके प्लेस पे आके, आपके साइकोलॉजी में आके वो अच्छा कर जाते हैं और आप अपनी इन्वायरमेंट में अच्छा नहीं करते हो। सिर्फ हम रिसोर्स की बात करते हैं। इसका मतलब रिसोर्स नहीं, रीडिंग एंड हाउ टू मेक ए बेटर प्रोडक्शन हमें समझने की जरूरत है। एम आई राइट ऑन माई टॉक और नॉट? So, how to really make it? What kind of sensitization I want to create? That's very important. Understand it. Now, whatever I am trying to say, that's why you just focus on. What I am trying to say is that we have to study this macroeconomics to make sure that we should be competitively producing. Now, for understanding that production, we have to understand a framework. Framework is clear? Let's understand how that framework is going to work. I am going to remove some of these informations. There are various economic sectors. And in this economic sectors, you have household sector, business sector, government sector, and external sectors. There are 4 sectors: household sectors, business sector, government sector, and economic external sectors. Now, these sectors, if you look, we had been knowing land, labor, capital, and entrepreneurship. These are the only 4 factors of production. And entire these 4 factors of productions are ultimately owned by household sectors. All the 4 factors are owned by whom? Household sectors. Land, labor, capital, entrepreneurship. They are owning it. Now, what they do, they try to utilize these 4 factors to make some production, and those who come out of household sector to utilize these resources to make production creates business sector, production sector. This is what production sector is there. We all individually belong to household sector. We all individually belong to household sector, whereas the moment we start producing, we represent business sector. Individually we will remain as a household sector. Now, what happens the moment business sector starts producing using these resources, there will be output, and output has to be distributed. It has to be distributed. So, instead of output distribution, whatever revenue generation is there, or you can say income generation is there, that income generation has to be distributed among all these factors, and we know factor payments. So, land again same, rental, wages, interest and profit has to be paid. This is what the payment has to be made. Who is producing? Business sector. Irrespective of that how many owners are there, it's a one individual is going to produce or a group of individuals collectively is going to produce. There is no question mark right now, only production unit is there, and on the basis of nature of groups you decide about the nature or classification of business. It may be sole proprietorship or it may be big company, right, but ultimately production has to take place in the business sector.
प्रोडक्शन कैन नेवर टेक प्लेस इन हाउस होल्ड सेक्टर। और यहीं से इकोनॉमी डिफ्रेंशिएट होता है। एक्चुअल फैक्ट समझने की कोशिश कीजिए। मैं अगर हाउस होल्ड सेक्टर में वो काम खुद कर रहा हूं तो भी वो बिजनेस नहीं बनेगा, until unless I say for business one. Is it clear? कोई भी एक्टिविटी हो, जब तक बिजनेस सेंस नहीं होगा, activity will not convert into business sector. For example, suppose someone has got a very good food cooking, और क्या किया, अच्छा अच्छा खाना बनाया, लाया, अपने पूरे क्लास को खिलाया, चैरिटेबली वर्कड, प्रोड्यूस्ड फूड, खिला भी दिया, बट स्टिल इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। बट वो क्या किया, लाया, बोला देखो यार 10 रुपीज पर प्लेट, राइट, और अब है खाना है तो 10 रुपये प्लेट दे दो, जो भी है। अब आप क्या हो गया, ये बिजनेस एक्टिविटी हो गई। क्लियर? सो चैरिटी इज आउट, charity is out, welfare is out. Okay, what is important is business mindset has to be there. Business, and what is business? What is the main objective of business? To generate revenue. Profit तो outcome होगा, होगा नहीं profit होगा वो बाद की बातें हैं, बट क्या है important? Generate revenue. Clear? Even आप लोग सब इकोनॉमिक्स 10th 11th में पढ़ के आए होंगे तो समझ गए होंगे कौन सी एक्टिविटी काउंटेड होता है, नहीं होता है, क्यों होता है। फिलोसफिकली it is only business sector has to go with that. So production has to come from this business sector, and distribution, and that is also very much importantly it is followed. How it is followed? Business sector produce कर दिया, revenue generate हुआ, बोला सबको बांट दो। And interestingly, business sector is a legal sector, pseudo sector, not a natural sector. Business sector, natural तो household sector है। Natural क्या है? Household sector है। We individual belong to household sector, and resources belong to household sector. तो जो भी धरती पे, आसमान में, धरती के नीचे सब कुछ तो household sector के हाथ में है। तो बिजनेस सेक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं होता, वो एक लीगल एंटिटी है, एक यूनिट है जो एक्टिविटी बेस्ड ग्रुप बना है। एंड हाउ टू हैव अ थ्योरेटिकल प्रूफ और प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ इट? प्रैक्टिकल प्रूफ इज दैट वो करने के बाद जो भी होता है सबको बांट देता है, उसके पास कुछ रहता नहीं है, क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं। बिजनेस सेक्टर का अपना कुछ नहीं है, और जब वो सब कुछ बांट देता है, एंड दैट्स व्हाई बैलेंस शीट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। आपको हो सकता है थोड़ा सा गलती से गुमान हो जाए कि आई एम अ शेयर होल्डर, मुकेश अंबानी को, अडानी को हो जाएगा आई एम द ऑनर। से अपना बुक तो एक बार देख लो, वो तुम्हें लाइबिलिटी मान के चल रहा है। यू आर ए लाइबिलिटी फॉर दैट बुक, यस और नॉट? और बैलेंस शीट बैलेंस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस सेक्टर के पास अपना कुछ भी नहीं है। जहां गैप क्रिएट हुआ वो आप कहते हो कि सस्पेंस हो गया, दैट्स अ डिफरेंस। ठीक है, अब बिजनेस सेक्टर हैज गॉट रिसोर्सेज, समटाइम इट हैपेंस माइट नॉट बी इन ए पोजीशन टू रियली गेट द कंप्लीट प्रोडक्शन, और ह्यूमन बाय नेचर may not be that gentle, they may be selfish, may be fraudulent, मौका मिले बदमाशी कर डालो, exploit the opportunity, do some wrongdoings, defraudulent activity. So fraudulent activity, if it is there, someone should be to make sure that it should be fairly distributed, properly generated, without any exploitation. Government sector is meant for that. GS has got only one responsibility. Again, GS also belongs to household sector, meant for household sector. यही है ना? GS means government sector, और खास करके डेमोक्रेसी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, नाम ही प्रजातंत्र है ना? We decide who will be representing there. So ultimately, government sector is meant to make the guideline to regulate. GS sector has no role to come and play as a business sector.
There is no role of the GS. Government sector has got only one role, and what is that role? Law and order, policy frame, and accordingly implementation of that policy, and making punishment to those who are deviating. Punishment has to be there. So, this is the responsibility of government sector. But government sector is also having a responsibility to take care of household sector. Household sector has to be taken care of. The needs, the demands, the proper care is required. So, household sector should be taken care of, that what government sector take care. So, government sector is actually motivated not only to make sure that policy frame related to business sector, rather also it is related to how they are going to decide, how they are going to make sure that household sector should be fairly rewarded. And various schemes are there. These schemes ultimately enables the government sector to act the way it should act, and there it may be that someone should be charged high and someone should be given free, could be the decision of the government sector, maybe product is same, and we call it welfare economics, right or not? जिस प्रोडक्ट के लिए उसी सोसाइटी में एक को पे करना पड़ रहा है, दूसरे को फ्री मिल रहा है, और हम मान के चलते हैं ये है, और ये डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट सेक्टर। एक तरफ, और बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एक तरफ टैक्सेशन है, दूसरी तरफ सब्सिडी है, और अब सब्सिडी के अलावा तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी है. You all know that's not only subsidy, free distribution is also there, and it has got its own importance. It has got its relevance. We may have a critical evaluation, that's a separate exercise. कितना होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, किस डिग्री तक होना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, all those things could be matter of discussion, but time being we say that yes, it's macro level, government decides. Clear? Sometimes pricing itself is depending upon the user's capability to pay, not the whatever cost of production is there. Example, electricity. When the same electricity unit is given to a farmer, it has got a different price. When it is given to a household, it is a different price. And when it is given to a commercial sector, it is a different price. And industrial sector, again very high price. मालूम हो 10 पैसे में आप फार्मर को दे रहे हो या 50 पैसे में फार्मर को दे रहे हो और 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इंडस्ट्री को दे रहे हो. ये इतना बड़ा गैप है और 10 पैसे से 15 रुपये के बीच का डिफरेंस आप समझ लो कितना बड़ा है. How many times you are charging to someone for same quantum of electricity, same unit of electricity. That's the way distribution is. So all these responsibilities lie to government sector. Clear? So ultimately, who is the master here in the entire exercise is household sector. Society at large has to decide how to make it, because those government sector is also belonging to household sector. Now household sector needs something. It may be actual necessity or maybe imitation. What is actual necessity? दवा की ज़रूरत है, कुछ हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत है, अब पढ़ रहे हैं तो लैपटॉप की ज़रूरत है. बोला गवर्नमेंट से भैया लैपटॉप तो दो, वी नीड लैपटॉप, वी नीड मोबाइल. गवर्नमेंट बोला कि हमारे पास तो कोई प्रोड्यूसर है नहीं, बिजनेस सेक्टर है नहीं. क्या किया गवर्नमेंट ने? बोला चलो यार दूसरे से ले लेते हैं. And then a fourth sector appeared. And what is that sector? External sector appeared. Now a question arises here. Year after year, decade after decade, you kept on importing from others. Is it that a valid exercise for a government? Answer is no. यार आपकी responsibility है, ठीक है, अभी नहीं है. Okay, you started with you had a limitation, but how long you will keep on doing that? How long you will keep on taking it only through import? And if it is that, then how long you are going to survive in a good way? तो क्या responsibility होती है? You make sure that your business sector should also start producing those items. Is it clear? That's another very interesting part of a study which you all should go through. As time will progress, it will be matter of discussion, and there we feel when government comes and says now I am going to work on Make in India, you can understand what is the now relevance of Make in India, why it is essential. Yes or not?
Second, why we export or import? Actually, why we import, you yourself has answered, we are not self-reliant. Yes or not? We don't have, that is why we need from outside. Now, that is what I commented. Who stops you to become self-reliant? And out of that comment in 2020, you know, when the entire world was fighting for pandemic, COVID, at the time Indian government was transforming to make themselves self-reliant. And very scheme is called Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat is not a philosophy, rather it is an economic aspect, component. A very big macroeconomic transforming exercise. Ab khair, you don't require to reach to that height of Atmanirbhar Bharat. I am just exposing that the kind of macroeconomics you are studying, and when you have to keep on scaling up, you will find out that these are the certain dimensions you have to have it. And then critical evaluation come, okay, how much we have achieved and what else is really required to achieve. And that when we say congratulations, we have increased our export, it makes a lot of sense. Is that clear? Thou say export versus import, import was very high, export was low, and that there was a current account deficit. Of course, these things will be, because I think balance of payment is complete one unit you have to study, and I am sure I think that unit I myself will be taking, because other faculty will also come for other topics, and balance of payment I will take care of it. So, whenever it goes to that extent, it says that how to reduce the gap, and that gap reduction is very important challenge. So, external sector, now again question arises, government should import and then hand over it to the public, household sector, business sector, or government should only allow the business sector and household sector you go and import. This aspect we will study in balance of payment, and a word which will be coming up, and my favorite term which will come in the examination, 90% chances that will come in examination, is called capital account convertibility. How convertibility is going to take place? Capital account convertibility is an important question in the balance of payment. It will be appearing. Right. Now, that is the way external sectors is working. Our objective is very simple, very clear, that instead of making our import very high, that so many countries are importing anyway, so why not we can substitute. So, what are the import items, maximum import item we have got? सबसे ज़्यादा क्या import करते हैं हम लोग? Electronics, okay. Petroleum, very good, petroleum import करते हैं, और heavy engineering items import करते हैं, एडिबल बैल में पाम ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं. तो दो तीन आइटम ही अगर अभी स्टार्टिंग में लेके चलें, राइटली सेड दैट पेट्रोलियम है, जनरली नंबर 1 रहा है, हेवी इंजीनियरिंग आइटम्स आर नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी इंपोर्ट करते हैं, थर्ड आइटम टेक्निकल नो हाउ इंपोर्ट करते हैं, दीज ऑल आर देयर. ऑल दीज इंपोर्ट्स विच वी मेक, हाउ टू सब्स्टिट्यूट इट, what way we have to substitute so that it could be self generated. Now, especially when we talk about petroleum, where we have whatever our consumption is there, 83% of petroleum is actually imported, 83% imported. And when we say 83%, it has got two important factors which may affect your economy adversely. Factor number 1, you have to make payment of petroleum in foreign currency, and if foreign currency start appreciating, means price of currency start increasing, then in that case your outflow in terms of domestic currency will high, it will increase, right. So, पेट्रोलियम का प्राइस नहीं भी बढ़ा, बट डॉलर का प्राइस बढ़ गया तो आपके लिए महंगा पड़ गया, इट इज कॉस्टलियर. सेकेंड,
पेट्रोलियम का ही प्राइस अगर ऊपर जाने लगा तो दैट इज अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर दोनों ऊपर जा रहा है तो इट इज अ मैग्निफिसेंट इम्पैक्ट, मैग्निफाइड इफेक्ट. And then we say, sorry, we can't help it. It is going to move up to a greater extent. So, what could be the suggestive mode? And it is going to distort your entire balance of payment. What to do then in that case? क्या लगता है कैसे कम करना चाहिए इसको? Alternative solutions. पहला alternative solutions EV. ऐसा नहीं हो सकता कि वेस्टेज को मिनिमाइज करें, वेस्टेज मिनिमाइज करें. अगर गाड़ी को अच्छी से पार्क करें, ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा तो पेट्रोलियम अननेसेसरली वेस्टेज नहीं होगा. बेसिक थिंग है. वैसा ना छोड़ दो पूरी कंट्री को, दिल्ली को ही देखो, जहाँ तहाँ बीच में रोके हुए हैं. गाड़ी का स्पीड ऑन एन एवरेज कितना चलता है? 10 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम. ऐसा ना कभी कभी तो 5 किलोमीटर भी रहता है किसी गली में. हाउ मच फ्यूल अननेसेसरली इट इज गोइंग टू बी वेस्टेज. Multiply by the number of vehicles, multiplied by that price, and look into that where we are wasting instead of non-productive activity. It is that sensitization which is really required. And you might have a case analysis, case type of questions, where this kind of environment will be given and you will be asked what are the suggestive modes. Be mentally ready now, because not necessarily the way first semester has come, second semester will also come in the same way. It may have changes, and that is what it is, professional course. So, you have to look into that, how to minimize that. Of course, alternative like EV, and the kind of effort India is making to have that electronic vehicles, the electrical charges and electrical vehicles, solar vehicles, carbon vehicles, hydrogen vehicles, all these are there. These are nothing but to look into that how best you can make it. So, these are the certain aspects which we have to study. Complete sector has to found and make sure that household sector, business sector, government sector and external sector should be working. External sector is what? Export and import, X and M, two are going to be there. Rest everything we will discuss in external sector when we will take a unit of balance of payment, understanding how balance of payment ought to be there. And not only that, we will study practical balance of payment also, something like how India's balance of payment is there, what Chinese balance of payment is there, German's balance of payment is there, European balance of payment is there, American balance of payment is there, Switzerland's balance of payment is there. At least 7-8 countries comparative analysis we can view. So, we can have a better understanding if Switzerland is one of the best in the economy, why they are best in the economy. Honestly speaking, Switzerland does not have resource. It is a cold desert, सिर्फ आइस है, और फिर भी स्विट्जरलैंड फैंटास्टिक डेस्टिनेशन होता है. ऐसा नॉट, इकोनॉमी बहुत अच्छा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्रू आउट सरप्लस है. तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स समझने की जरूरत है ना. और इंटरेस्टिंगली हम कभी ऐसा नहीं है कि इवन प्री इंडिपेंडेंस वी हैव केप्ट ऑन स्टडिंग इकोनॉमिक्स. तो इतना इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद भी हमारी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ क्वेश्चन मार्क है ना कि जो पढ़ना चाहिए, जो समझना चाहिए, वो समझ नहीं पा रहे. विच फॉर्चुनेटली इन आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू इट, एंड इवन थ्रू क्वेश्चन पेपर्स it will be totally different, right? Now, come to the next point, one more important point which we discuss, another dimension of economics. So, I mention our economy in this disk concept where core company is there, industry is there, and finally, on surface economy is there. Now, another aspect which I want to make is, in the economy there is a primary sector, secondary sector and tertiary sector. You must have read this. Primary sector of economy, secondary sector of economy and tertiary sector of economy. What is primary sector?
जो एग्रीकल्चर से इनकम होता है। वेरी गुड। एग्रीकल्चर एग्जाम्पल है या डेफिनेशन है? तो एग्जाम्पल दोगे डेफिनेशन पे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। पहले डेफिनेशन। यस, extracting the raw materials or natural resources from the land. very good. So what is primary sector? Again redefine and refine your definition. Refers to the Uses natural resources or produces natural output? It produces natural output through rearing and care, right? You are not making anything. हम आप बनाते नहीं हैं उसमें, क्या करते हैं उसका? केयर करते हैं, रेयर करते हैं, केयर करते हैं। रेयरिंग एंड केयरिंग। आउटपुट इज नेचुरल, output is natural. So wherever your output is natural, sector is primary. Clear? Agriculture could be best example for it. Animal husbandry, forestry, quarrying, mining, so many things are there. हम लोग क्या आयरन बनाते हो और बनाते हो क्या? नहीं ना। मिल्क बनाते हैं? नहीं, बनता तो है फैक्ट्री में जिसपे पुलिस छापा मारती है। Okay, it's not that. It is a natural output, which is primary sector. Be very careful. Primary sector is the sector which gives you natural output. Okay. Sometimes it's just mere collection. Forest में आप कुछ, forest में तो rearing भी नहीं करते आप, forest में mining भी नहीं करते आप। forest में क्या होता है? Simply जाके आप collect करके ले आओ। Generally medicinal plant या हिमालयन रेंज में कोई लगाने नहीं जाता है वहाँ, है ना? वहाँ क्या करने जाते हो? सिर्फ आप उसको प्लग ऑफ करने जाते हो, तोड़ने जाते हो। And very costly medicinal plants are there. That's another one bone of contention between China and India related to Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh has got a very huge costly medicinal plants. और वो क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि उसको लेके उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, which very limited people are aware of what is their attraction into those barren lands and why they encroach. The encroachment is not meant only to कि टहल के चले आए, थोड़ा सा अपनी तरफ गर्मी लग रही थी तो इधर आ गए, ऐसा नहीं है। It is basically those resources they want to take, which now India has started retaliating, we will not allow you. So that's a primary sector. What is the secondary sector? How to define secondary sector? output produced. Those sector which is change raw material into final product. Very good. I am very happy to have him. Now we can refine definition further, but he was very alert कि next time गलती नहीं करूँगा, and he tried to define it. Yes, but still a very sweet definition you can make it. Value addition to the primary output is called secondary sector. What you are going to make it? Value addition, and there is a degree of value addition. A range of value additions are there. Now I am first time I am using the word value and value addition. Jot down that. What do we do in secondary sector? Value addition. Think of any natural output. Bamboo stick लिया, उससे एक छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा पीस काट के और उसको तैयार कर दिया, और आराम से बैम्बू स्टिक का कुछ नेचर का है, इतना सिंपल आसान सा है, काट के बना के और आपको डिस्ट्रीब्यूट किया। कहाँ? कैफ़े सेंटर खोला, शुगर डाली, उससे रिजल्ट कीजिए। देखे होंगे आप, एक छोटा सा स्टिक रहता है, पतला सा स्टिक रहता है, कोई बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं है। India has got a lot of policy changes because of that, and my objective to share with you is that so that you can understand all those base. First example I'll give you. छोटे छोटे अपने पॉलिसी को हम गलत तरीके से कई बार इंटरप्रेट किए, ये समझ नहीं पाए या उसके डिग्री को नहीं समझ पाए। In India, bamboo was considered as a tree. Bamboo, you know, it's a big one, बांस का पेड़. It was treated as by definition tree. In 80s, for environmental care, cutting tree was prohibited. देखो छोटा सा पॉलिसी कैसे इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है और कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीजें। So cutting tree was not there. Now bamboo use was prohibited or become very costly, because when supply will be lesser, the price has to go up. And
the basic small product which should had otherwise been prepared from bamboo stick within country, and fortunately our climatic condition is very favorable to bamboo stick. We can have northeast जाओ, northern जाओ, eastern जाओ, जहाँ जाओ आप bamboo stick आपको आराम से मिलेगा. मेरे यहाँ ऑफिस में भी bamboo stick का अच्छा खासा बना हुआ है एक ग्रुप्स. अब काट आप सकते नहीं हो, बना सकते नहीं हो. आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे और आइसक्रीम एक छोटा सा लकड़ी का इतना बड़ा एक माने वह स्पून भी नहीं रहता है, जस्ट एक स्ट्रिप रहता है, एंड दैट इज इंपोर्टेड वन. दैट्स इंपोर्टेड वन. थोड़ा सा वो करते हैं, या कई जगह देखोगे बंच में से किसी पार्टी में जाओ तो पेपर में भी रैप नहीं होता, ऐसे ही रखा रहता है, वो इंपोर्टेड आइटम है. एंड वी हैज गॉट अ ह्यूज आउटफ्लो. देखने में छोटा लगता है, प्राइस छोटा है, बट मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम. थिंक ऑफ ए वॉल्यूम, इट गॉन अप. 2016, as late as 2016, the bamboo policy got changed, and that policy, the definition, what government, how government directly or indirectly influence. I'm just sharing the recent example with you. What happened? They simply reclassified the bamboo from tree to grass, and now present definition, bamboo stick is a grass, and the moment it is a grass, cutting the grass is not prohibited. Entire bamboo. अब bamboo cultivation का, और बैम्बू कल्टीवेशन ही नहीं, अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप इंपोर्ट कर रहे हो इसको अपने घर में बनाओ ना, बैम्बू आइटम बनाओ. बैम्बू के फर्स्ट क्लास आप फर्नीचर्स बनाओ. एक से एक बैम्बू का फर्नीचर आप जानते हो बहुत कॉस्टली फर्नीचर होता है. आप एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट यू कैन क्रिएट. फ्रूट होल्डर्स है ना बैम्बू का, ऑलवेज फेवरेबल टू एनवायरमेंट, इको फ्रेंडली. Another side you look upon. So now one policy got changed, one government decision got changed, entire economy moved into a different direction, and we started. And not only that, motivate the business houses to do accordingly, go accordingly, work accordingly. That's what the business houses has to cover up. A number of these examples, how these sectors ultimately has to work and how to promote. Why we were not able to make our secondary sector to be competitive in the global environment. That I'll highlight today to make you understand where our economy has lacked. And rest is theoretical portion, certainly we can study a lot. When race was there, when economy was really going, progressing, at that point of time, ultimately it was felt that our economy is missing into manufacturing sectors. 70s and 80s we missed a lot, and ultimately impact was there. We were not in a position to pay for even import. देखो आप import कर सकते हो, नहीं खुद produce करो. मैं बैठता हूँ कुछ नहीं बनाऊंगा, खरीदता हूँ बाहर से, जो बना रहा है बाहर से खरीद रहा हूँ. When you don't produce and you only keep on focusing on import, a time will come when you will not be able to afford for import because you are not generating income. Is it not? आप इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो तो फिर शुरू में तो थोड़ा आप काम कर रहे हो तो इनकम है तो उस इनकम से आप एफोर्ड कर दोगे, लेकिन एक टाइम आएगा जिस टाइम में यू विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू पे फॉर योर एक्सपोर्ट आल्सो, सॉरी योर इंपोर्ट आल्सो. नोबडी विल बी एक्सपोर्ट, नो एक्सपोर्टर विल बी कीप ऑन एक्सपोर्टिंग यू विदाउट पेमेंट. तो कहेगा भैया पहले पुराना पैसा हिसाब पूरा करो उसके बाद देंगे. एम आई क्लियर? रिजल्ट क्या हुआ? 1986-87 से इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का हालत खराब होना शुरू हो गया, और 88-89 में आके बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइस राइज एंड ह्यूज राइज ऑफ द ऑयल प्राइस रिजल्टेड इनटू बिग ब्लो टू इंडियन इकोनॉमी, अनेबल टू पे. और उसके ऊपर से रहा सहा कसर क्या हो गया? In 90, because of those oil price and problem, there was a Gulf War. Iraq was struggling a lot. Iraq, one of the oil one, but had a tough time, very difficult time. Iraq attacked on Kuwait, and in retaliation, US attacked on Iraq. मालूम हुआ हमें evacuate करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा. 93 times air flight had taken place. मूवी भी बन चुका है उसमें. One can watch that to understand that economic happenings, but we were in a big trouble, and ultimately
there was a notice from United Nations, from IMF, that sorry dear, you don't have the paying capacity. And वहाँ से इकोनॉमी को हमने चेंज किया. 1991, you must be knowing LPG, liberalization, privatization, globalization. It was under compulsion. Identical situation is right now Pakistan is also facing. Pakistan economy is in a very tough situation, on the verge of collapse. And again, IMF is going to help out. Few months back, you have seen Sri Lankan economy. We had already faced 30 years back. हमने 30 साल में अपने आप को strong किया, which moved. So many philosophies, so many policies of economy got changed, and it gave the direction, and prosperity started coming up. So that's the way it started moving. What was the best? Unfortunately was one in our entire process of development, economic development journey. And what was that? We had primary sector. Indian economy was from beginning a primary sector centric economy. We say agrarian economy, agro based economy, but neither we concentrated on the processing of agriculture output, nor we focused on manufacturing at large. थोड़ा help ये मिल गया कि tertiary sector, what is that tertiary sector? Service sector. Especially service sector became very favorable to us. Service sector became favorable. Now what happened in service sector? Pardon? Tertiary sector is service sector. In any industry you provide service. For example, your IT sector, health sector, banking sector, teaching, yes, I am in service sector right now. So any sector where service is there. Service is required in every sector. Agriculture also requires service. Secondary sector requires service. Tertiary sector requires services. But how the classification will take place depending upon the output. Agriculture requires service. Labor चाहिए ना? From sowing to last harvesting and packaging every labor चाहिए. लेकिन output labor नहीं है. Output क्या है? Agro output है. That's why that is primary. Manufacturing में वहाँ भी labor चाहिए ना? बिना labor का manufacturing नहीं होता. पैकेजिंग से लेके सारा सेलिंग, इवन जो सेलर है आपका, डीलर है, वो भी तो लेबर है. फिर भी आप डीलर को नहीं हैंडल करने जा रहे हैं, आप प्रोडक्ट हैंडल करते हैं. क्लियर? दैट इज सेकेंडरी वन. एंड टर्सरी में क्या है? यू आर एक्चुअली टेकिंग सर्विस. वहां भी मटेरियल यूज होगा. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये. फॉर एग्जाम्पल, ए पेशेंट विजिट हॉस्पिटल, it gets bed, patient gets bed, patient gets medicine, patient gets lot of other facilities, amenities. But is it really patient for that? It is actually meant for health service. तो हेल्थ में आप क्या इंपॉर्टेंट होता है? हेल्थ सर्विस इंपॉर्टेंट है. वहाँ आपको टेलीविजन भी आज के डेट में मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटल में. बात भी करते हैं, केबिन सेपरेट है आपका, सोफा लगा हुआ है. अब सोचो होटल है या हॉस्पिटल है, ध्यान देने की जरूरत है. होटल में भी रहता है, वो आपको चार्ज करेंगे कि आपका पेशेंट का रूम है, उसके साथ अटेंडेंट का रूम है, उसके साथ लोग के मीटिंग का भी रूम है. मालूम हुआ क्या? 45,000 रुपया पर डे. ये 45,000 है. अब किस चीज़ का 45,000 है? नाम में देखोगे आप कभी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जरूर देखो जाके, डिलक्स रूम मिलेगा आपको, प्रीमियम रूम मिलेगा आपको, है ना? ये डिलक्स रूम और प्रीमियम रूम किस इंडस्ट्री का लैंग्वेज है? होटल इंडस्ट्री का. हॉस्पिटल का लैंग्वेज नहीं है. हॉस्पिटल में तो मैंने सुना था ये ऑर्थोपेडिक है, ये आई डिपार्टमेंट है, ये न्यूरो है, लेकिन वहां तो डिलक्स की बात हो रही है. You must have visualized that overlapping of the industry sectors, because they want to have that kind of thing and they are charging ultimately. Service premium is going to be charged. So, but still it is service. It is the health service. It is not that service which we are going to consider. So, tertiary sector is going to work. इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ? इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि वो प्राइमरी पे भी बहुत फोकस नहीं कर पाया, सेकेंडरी पे नहीं कर पाया, टर्सरी समझ में नहीं आया. तो पॉलिसी मेकर्स एंड व्हाट समझ में नहीं आया? देयर वाज अ 3 थिंग्स कॉल्ड ICE,
the development has taken place. Please jot down key words, and whatever I am saying you require at least hundreds of book reading, then only you will be able to understand these things. No textbook says like that. What is I am saying? What was the base of development? It was ICE. ICE. I stands for information technology, C for communication and E for entertainment. ये तीनों का तीनों जो सेक्टर था इंडिया का, ये तीनों को किसी तरह से समहाउ गवर्नमेंट की नज़र कम पड़ी इस पे, गवर्नमेंट को लगा ऐसे ही बच्चे का खेल है, और ये तीनों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडिया को. Information technology, especially in the information technology, two segments are there. Information technology, how many segments? Two segments. One segment is your software, another segment is hardware. Hardware require manufacturing. Again we were not there because we require आप हमें लाइसेंस दो, हमें परमिशन दो. सॉफ्टवेयर पता ही नहीं चला कहाँ से बन रहा है. मालूम हुआ कॉलेज के स्टूडेंट रूम में बैठे बैठे रात में सॉफ्टवेयर बना दिए. आराम से जहाँ से चाहो डेस्टिनेशन पे भेज दो. And India became one of the best software maker in the world. आप सिलिकॉन वैली जाओ तो सिलिकॉन वैली में आपको एक्चुअली वो कहने को यूएस में है इंडियन के कंट्रोल में. Why it is so? Because government was silent on that. Government was not really knowing it is a big one. Government को तो ठीक था, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटराइजेशन नहीं होना चाहिए. दैट वाज व्हाट द फिलॉसफी ऑफ गवर्नमेंट. और यहाँ कंप्यूटराइजेशन होके चेंज कर दिया. बट कंप्यूटर नहीं बना पाए हम. आज हाउ मेनी इंडियन मेड लैपटॉप यू आर यूजिंग? एनी कंपनी इंडियन मेड? Even in 21st century, 2 decades has crossed. Third decade, we are in the third year. It's a matter of question. We all are using the mobile phones. How many Indian made mobile? That's a question mark. Why so? जबकि इंडिया में इतना बड़ा टैलेंट है. सॉफ्टवेयर जो सबसे टफ टास्क था वो हमने कर लिया, और जो हार्डवेयर नॉर्मल था, ऑपरेशन था, प्रोडक्शन था, उसमें हम पीछे रह गए. आप कैलकुलेटर भी जब खरीदोगे, कैलकुलेटर खरीदे होगे कैलकुलेशन के लिए, देखे होगे हार्डली इंडियन कैलकुलेटर यू मस्ट हैव बॉट. आप कैसियो और शार्प पे ही जाते हो, है ना? क्यों भाई? जो मून पे जा सकता है, क्या वो कैसियो वो एक कैलकुलेटर सिंपल नहीं बना सकता? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पॉलिसी फ्रेम और कनेक्ट मिस कर गया. द रूट कॉज ऑफ आर पुअर डेवलपमेंट. सी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आई नो यू ऑल आर स्मार्ट स्टूडेंट्स. मैं आपको नेशनल इनकम आराम से बता दूंगा, जीडीपी और जीएनपी के डिफरेंस बता दूंगा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस बता दूंगा, आर प्लस डब्ल्यू प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट बता दूंगा. वो तुरंत वो एक क्लास में एक झटके में पूरा हो जाएगा. बट हाउ टू रियली इंक्रीज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाट मेक यू प्रोफेशनल. बिकॉज द सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो तो नॉर्मल बीकॉम में भी लोग पढ़ रहे हैं. So my question is how you are different from their understanding of macroeconomics. Is it fine? So where the difference has got created? Because we ultimately didn't. So is communication. And you know we are communication giant in the world now, and our transformation is very fast. And we have reached better than so many other countries in the terms of communication. So many foreigners visit India and now they get surprised कि आपके यहाँ इतना अच्छा कम्युनिकेशन, इतना अच्छा इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है. बल्कि आप जानते हो हम लोग इन्फोटेनमेंट, एडुटेनमेंट, पता नहीं कितने टेनमेंट हैं. मोबाइल इज नो मोर इज ओनली योर मोबाइल. एंड द काइंड ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग वी आर मेकिंग, डिजिटल पेमेंट्स वी आर मेकिंग, एंड दैट्स अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल आई शेयर विद यू. यू ऑल आर वैक्सीनेटेड. How much time you have spent in in the queue for getting your vaccination certificate available to you? No queue. Ask your US counterpart if you know somebody in USA as on date also this vaccination certificate. They have manual vaccination certificate. Long queue, common waiting time more than 45 minutes in the beginning. सबसे शुरू में तो 2 घंटे वेटिंग टाइम था, क्यों में लगी है. और इतना ही नहीं, उसमें फ्रॉड बहुत था. मुझे ट्रैवल करना है, मेरे वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, सर्टिफिकेट दिलवा दो. हो सकता है ना मैनुअल में.
आप सोचिए कि इंडिया जैसे, और वॉल्यूम देखोगे, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूएसए? एनीवन? 33 करोड़, 33 करोड़. व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? 140 करोड़. 23 करोड़ तो हमारे योगी बाबा संभालते हैं, राइट? एंड मोर देन 212 करोड़ ऑफ वैक्सीनेशन हैज टेकन प्लेस. ये मैं पुराना डेटा बता रहा हूँ, अभी इधर रिसेंट में हो सकता है 215 करोड़ हो गया होगा. 212 करोड़ का वैक्सीनेशन होना, सर्टिफिकेट मिलना, एंड 1 2 3 बड़े क्लियर से, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, बड़े क्लियरली आपको एक कंबाइंड सर्टिफिकेट अपने आप आ रहा है ना? What simply it indicates, we have really evolved in this information technology with all those communication is there ना. एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको इनेबल करता है, डिजिटल करता है, और कम्युनिकेशन आपके पॉकेट में इमीडिएटली डाल देता है. बैंकिंग ऑपरेशन, यू नो, इमीडिएटली यू आर गेटिंग दैट. सो दिस इज व्हाट. एंड थर्ड वन इज एंटरटेनमेंट. आज हमारा जो बॉलीवुड है वो हॉलीवुड से कम बड़ा सेट तैयार नहीं कर लेता है. And very important is that all those animation effect is available into it, right? What simply indicates we have really gone to the science and to that extent. But जब इतना अच्छा साइंस है, वो जो कौन सा मूवी था? बाहुबली टाइप की मूवी में जो इतना बड़ा सेट तैयार कर सकते हैं आप, और अच्छा खासा एनिमेशन इफेक्ट दिखा सकते हो, जो कभी स्पिलबर्ग के जुरासिक पार्क वगैरह में देखने को मिलता था. एक डायनासोर्स मूव करता था तो 70 कंप्यूटर्स लगे होते थे उसमें, और हर कंप्यूटर की फ्रीक्वेंसी अलग रखी गई थी, ताकि जब वो एक बार पैर रखे तो आपके ग्लास में वो वाइब्रेशन हो, और पूरे जो ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो थ्रिल्ड हो जाएं, थोड़े डरे कि आ रहा है. वो मूव जो करता था, एक साथ 28 कंप्यूटर एक सीक्वेंस में मूव करता था, तो वो देखते होगे ऐसे करके वो पूरा, आप लोग देखे हो जुरासिक पार्क? वो मूव करता है, 28 कंप्यूटर को आपने अरेंज कर दिया, सीधा एंटायर थिंग कंट्रोल वहां से आप कर रहे हो. और हॉलीवुड भी अब उस लेवल पे है, सॉरी बॉलीवुड आपका उस लेवल पे है जो एनिमेशन इफेक्ट दिखाता है. It means our service sector, tertiary sector, no way we are behind with anyone. Little bit productivity has been issue. Productivity has to improve on a general way. Some specific segment, only 3 segment I mentioned, ICE. I again further can get divided into 2 parts. One is information technology, which I said that software, hardware. Again software into 2 parts, normal software for programming, and another there is a call information technology enabled services, IEOS, है ना, जिसमें आप इनेबल सर्विसेज क्या है, आपको कर्टेन हटाना है, रिमोट है, रिमोट से कर्टेन हटा रहे हो, लॉक करना है, रिमोट से लॉक कर दे रहे हो. ये जो सारा इनेबल सर्विसेज जो आप कार के फीचर्स में देख रहे हो कंप्यूटर को, आज आपका बैग आपके साथ साथ बिना आपके टच किए चल सकता है आपके साथ. ये इंडिकेट करता है कि हाउ यू आर इनेबलिंग दो सर्विसेज. बट ये एक सेगमेंट है. दिस मच ऑफ बिग इकोनॉमी, कैन इट बी पॉसिबल दैट ओनली फॉर द फ्यू सेगमेंट्स इट इज वर्किंग? प्राइम सेगमेंट ऑल्सो हैज टू कम इन द मेन स्ट्रीम. So macroeconomy, we have to find out that how these 3 sectors is going to contribute. So next step to the talk. Any question here? I am deliberately giving you a very practical and wide horizon of the discussion, which is beyond the scope of the book, to make you understand what way macroeconomics is going to help you as a good manager, right? So let's come to the next point of it. How to come to know who is contributing how much? When you are studying macroeconomics, 3 important approach you should keep. Approach number 1, first approach, you must have the definitions, theoretical concept clear. That is the first thing required. This is for your preparation. Entire theoretical framework should be known, and it will be tested in your internal test as well. Like, what is GDP? You know GDP, and I say GDP factor cost, so you should know what is GDP factor cost. Or furthermore, income method of GDP calculation. You know, there is no excuse on that.
इनकम मेथड मीन्स इनकम मेथड, क्या ऐड होगा क्या नहीं होगा वो आपको जानना होगा. एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, दोज मेथड्स विल बी देयर, दीज आर फैक्ट्स. ISLM कर्व बनाना है, ISLM कर्व बनेगा. क्लियर. एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनेगा. साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रिएट करना है, मनी मार्केट वर्सेस गुड्स मार्केट का कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रिएट होगा, दैट यू हैव टू क्रिएट. This is the first segment, first pillar of the study. It is must, it is required, it is going to be tested into that. Second aspect will be how it is going to get applied, application sides. Application side. When you use this concept, where it will be applicable. Question will reach to that level also, application side of it. Like how you feel that why simultaneous equilibrium in the market is essentially required, explain with the logical explanation. क्वेश्चन हो गया पूरा पूरा फुल 10 मार्क्स का आप लिखिए क्वेश्चन को. मैंने ISLM पे क्वेश्चन तो पूछा लेकिन कर्व नहीं पूछा है आपसे. Why this simultaneous equilibrium is required? Actually you are looking for equilibrium. Contractionary economy, expansionary economy, and how you are traveling from goods market to money market or money market to goods market, that you have to explain. That question will be coming up. तो ये सेकेंड लेवल हो गया. फर्स्ट लेवल क्या था? थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन, वेरी डिफिनीशन, जो इंटरनल टेस्ट में वही काम ज़्यादा करेगा. दूसरा क्या हो गया? एप्लीकेशन. और तीसरा है करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स. अब जीडीपी की बात कर रहे हैं तो मैं पूछूं कि इंडिया का जीडीपी अभी कितना है? How much is the GDP of India as in absolute term? Any one of you, let's understand that, test yourself and make the class thrilled by knowing it. बोलो, कुछ नहीं, ब्लाइंड गेस भी करो. 7.2 क्या है? परसेंटाइल. अरे जीडीपी तो इनकम है ना, तो इनकम है तो कुछ अमाउंट होगा, ट्रिलियन होगा, करोड़ होगा, लाख करोड़ होगा, कुछ होगा. 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन. अच्छा, जब ट्रिलियन बोल रहे हो तो थोड़ा करेंसी भी बता दो. डॉलर्स. इतना आपको इंडियन रुपये से परहेज है? अरे कम से कम अपने क्लास में तो बोलो कि इंडियन रुपये में कितना है. यस. नाउ दिस इज व्हाट द थर्ड डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हाउ मच इज द लेवल ऑफ योर इनकम एंड व्हाट इज ग्रोथ रेट. और तब वहाँ से पता चलेगा हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बीट द जापानीज GDP, to beat the Chinese GDP, and when we could be number 1 GDP, how many more years it will take. What is the ranking of India GDP in the global market? Fourth, fifth, sixth, seventh, क्या है? Fourth. Who are the 3 else ahead of you? USA, China, Britain. You think so? Anyone else? This is my third dimension of the talk. Every time, every year, data get published. Rather, very frequently, every quarter get published. And also occasionally when we beat someone and we change our position, that also get published. So it is important that you can look upon how much is GDP. तो पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट तो हमारा वही है, नेशनल इनकम है. और जो उससे पहले का थ्योरी है वो तो 12th में पढ़ चुके हो. तो यहाँ नेक्स्ट क्या? और गलती से मैं क्वेश्चन सेटर रहा तो मैं तो फिर पूछूंगा ये सब चीज़ें. आई लुक इनटू दैट कि फाइनेंस के प्रोफेशनल बनने जा रहे हो और पता नहीं है, तब तक टेम्पटेशन कैसे होगा. So there is a difference of understanding same subject by the different courses students. You are not BCom students. You are not BA economics student. वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो भी यही टॉपिक पढ़ते हैं, but topic has to go on application level in this program. जहाँ उनका क्वेश्चन खत्म होता है, जो उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन हम आपको आंसर में दे देंगे, मतलब क्वेश्चन में दे देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन है, इसके आगे की कहानी कहो. सो अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट आई सजेस्ट,
if you are well-wisher of any of your classmates, invite them in the class, because these things may not even neither your SLM nor any textbook will be directly giving you then and there. अब किसी ऑथर को पढ़ लो, अभी जैसे फिशर को पढ़ सकते हो, डार्विन फिशर इज़ अ वेरी गुड बुक, आपके अपने SLM को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश की गई है, उसको पढ़ो आप। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं एप्लीकेशन वाली बात या प्रैक्टिकल डेटा है, वो तो आपको खुद मीडिया से पढ़ते रहना होगा। तो अभी तक मिला कितना है जीडीपी इंडिया का? 310 या मान लो 320 मान लो लाख करोड़, लाख करोड़ इज ट्रिलियन, 12 जीरोस डालो, 3.18 ट्रिलियन जो है वो डॉलर में। यार मेरे भाई, डॉलर में, रुपये में बात कर रहा हूँ, रुपये में बात कर रहा हूँ, और रुपये में करीब करीब 270-275 लाख करोड़ के आसपास का अपना इकोनॉमी है, राइट? एंड इट इज बेस्ड ऑन nominal value. On a real value, our value is totally different. We are third largest economy on the real value, and on nominal value we are fifth largest economy. ठीक है? US, चाइना, जापान, जर्मनी, हम सभी आगे हैं। हम लोग 6th थे, अभी ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। ऐसे आई एम नॉट थ्रिल्ड विद दैट, द साइज ऑफ द ब्रिटेन एंड साइज ऑफ इंडिया, बट स्टिल ठीक है, हमसे आगे, उनको तो ओवरटेक तो कर लिए ना, ओवरटेक कर चुके हैं, एंड दैट ओवरटेकिंग इज एक्चुअली गिविंग सम क्वांटम ऑफ मेंटल रिलीफ, बट इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी वी आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी in terms of purchasing power parity. What is purchasing power parity? We have a topic here in this macroeconomics, and एक question वहाँ से रहेगा purchasing power parity से. Interest rate parity and purchasing power parity, two are important parity when we talk about international relationship. These all are part of syllabus. Okay. So, you got that 3 dimensions, how you have to, every topic you should look into 3 and start asking those aspects. What is the first dimension? Basic theory. First वाला जो है वो कौन आपको पूरा कर देगा? SLM पूरा कर देगा, SLM आपको पूरा जवाब दे देगा, डेफिनेशन मिल जाएगा, कहीं भी पढ़ोगे, गूगल पर डालोगे, पहला वही मिलेगा आपको। दूसरा उसका एप्लीकेशन, वो थोड़ा सा केस स्टडी के थ्रू आएगा, केस स्टडी इज एसेंशियली रिक्वायर्ड। एंड थर्ड वन इज करंट फिगर्स, डेटास, पोजीशंस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कह रहे हैं, मैं पूछूंगा ना, हाउ मच इज करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया राइट नाउ? ओके, व्हाट इज द टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू, व्हाट इज द टोटल इंपोर्ट वैल्यू, व्हाट आर द आइटम वाइज इट हैज टू बी, दैट इज व्हाट द थर्ड डायमेंशन ऑफ इट. This should be approach of your preparation. Now, let's come to that measurement. Whenever we consider this measurement in the economy, there is a one important aspect in the economy. किसी का भी आप वैल्यू जज करते हो तो उससे कैसे जज करते हो? इनकम से, राइट और नॉट? अगर मेरा इनकम क्या है वो मेरा स्टेटस बताएगा, मेरा इनकम किसी से ज़्यादा होगा, किसी से कम होगा, उसके कंपैरिजन में मैं हायर हूँ या बेटर हूँ या लोअर हूँ, डिसाइड होता है. When you have any shopkeeper in your mind, you always have got an income of that shopkeeper. उसकी बहुत अच्छी कमाई है, और जब अच्छी कमाई होती है तो उसके बारे में है कि वो और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, फास्टर प्रोग्रेस करेगा. सेम इज एप्लीकेबल टू कंट्री ऑल्सो, टू इकोनॉमी ऑल्सो. So, economic income is going to get calculated. And the first task is that how to calculate economic income. Question here, what is economy? Again, back to my original discussion. Summation of all the people residing in that economy is the part of economy. Everyone's income clubbed together is your income of the economy. No confusion. Simple है. ऊपर से नीचे तक सारे लोगों का लिस्ट बना लीजिए. Ask them their income. Write that. Make a total, that is the income of the country. Simple. But is it really that simple? Why? Because two things are there. First one is nature of income may vary. That's the one is. चलो nature of income को भी आपने क्या मल्टी कॉलम बना लिया. Anyone can have income
out of either of the 4 or combination of these sources. Why same? Either you can earn your rent or your wages or your interest or profit. There is no fifth income. पूरी इकोनॉमी में, वर्ल्ड में फिफ्थ इनकम नहीं है. आपको इसी में सिर्फ एक रास्ते से मिल सकता है, एक से ज़्यादा रास्ता से मिल सकता है. आपको वेज भी मिलेगा. अच्छा ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में वेज, सैलरी, फी, रेम्यूनरेशन, हर वर्ड का एक ही मीनिंग है, लेबर पेमेंट. यू मे बी अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, सुपर स्किल्ड लेबर, हाइपर स्किल्ड लेबर, अल्ट्रा स्किल्ड लेबर, डजंट मेक एनी डिफरेंस. जितने भी आप लेबर हो, क्वालिटी हो. अनस्किल्ड लेबर यू नो दैट, जिसके लिए कुछ स्किल नहीं चाहिए. सेमी स्किल्ड थोड़ा स्किल चाहिए. स्किल्ड मीन्स स्किल चाहिए. सुपर स्किल मीन्स स्पेशलाइज स्किल चाहिए. हाइपर स्किल मीन्स और सुपर स्किल चाहिए. और फाइनली अल्ट्रा स्किल जो होता है वो यू मे बी ए रॉकेट साइंटिस्ट, समथिंग ऑफ दैट नेचर, which is not normally possible by the common people. That kind of a skill is there. पेमेंट आप वेज के हिसाब से लो, सैलरी के हिसाब से लो, प्रोडक्ट वाइज लो, फी कह के लो. अब एक डॉक्टर है, प्रैक्टिस करता है, सेल्फ प्रैक्टिस है, हर पेशेंट से फी लेता है तो वो सैलरी इनकम ही ना. तो दैट इज व्हाट इनकम इज देयर. रेंटल इज नॉट नेसेसरली ओनली द हाउस रेंट. You can rent your car, you can rent your machine, you can rent your any asset. That rent could be there. Rental income can come from any of the sources. कैपेसिटी लोग रेंट आउट करते हैं, बिजनेस में कैपेसिटी रेंट आउट होता है, राइट. दैट इज अ रेंटल. व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज वॉट एवर योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज देयर एंड यू आर हैविंग ए फिक्स चार्ज. एंड प्रॉफिट यू ऑल नो, वॉट एवर योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड फंडिंग बेस्ड ऑन दैट रिस्क इज देयर, दैट इज योर प्रॉफिट. कोई पांचवा सोर्स जिससे आपको इनकम मिलता हो, सोच के देखो, कहीं से इनकम आ रहा है? नो. सोर्सेस ऑफ मनी कुड बी देयर बट इट कांट बी इनकम. अच्छा, इनकम इकोनॉमिक्स में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू अर्न द इनकम, अदरवाइज इट विल नॉट बी इनकम. You may treat as income, you may treat as income, but it is practically not income if you are not done to earn that. The classical example which I always said that, suppose in your house someone comes to clean your house, to clean your utensil, and you are paying the money. आया, काम वाली होती हैं, काम वाला होता है, जो भी हो, you pay them say 2000 rupees per month. You are paying. वो 2000 रुपीज़ वो लेडी आके काम करके ले रही है और आप भी अपने पेरेंट्स से कहते हैं मुझे तो पॉकेट खर्च चाहिए. पेरेंट ने आपके लिए भी 2000 रखा है. तो यू आर ऑल्सो, फादर के लिए क्या है कि वो 2000 उधर भी दे रहे हैं, 2000 इधर भी दे रहा है. बोथ हैज़ गॉट 2000. अच्छा, वो जो 2000 से अपना काम कर सकती है फ्रीली, आप भी 2000, आप भी फ्री हो अपना खर्च करने के लिए. इट इज़ इन योर पॉकेट एंड यू डिसाइड वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू एक्सपेंड. But interestingly in economics your income is not income. It is not an income. क्यों इनकम नहीं है? पैसा तो मिला. क्या हुआ? वन वे इनकम तो होता ही नहीं है. वन वे तो टू वे होना चाहिए. वन वे तो चैरिटी होगा, ऑलवेज चैरिटी होगा. एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट. व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट. सो अगर आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, यू आर नॉट डूइंग समथिंग, then in that case it is not going to be an income. अब इसको इकोनॉमिक बैड्स मान लें, डिमेरिट माने, लिमिटेशन माने, जैसे भी माने, बट इट इज़ फैक्ट एंड इट इज़ नॉट एन इंडियन डिफिनीशन, इट इज़ थ्रू आउट ग्लोब, इट इज़ द वे इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड. अब थोड़ा फ़र्क मुझे पड़ता है, थोड़ा सा वो, आप लोग कितने लोग हैं जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं? सबने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ रखा है थोड़ा बहुत. ओ, तब तो फिर मैं आगे आराम से बढ़ सकता हूँ. नॉन इकोनॉमिक्स हो, इसीलिए तो बातें कर रहे थे. यू हैव टू बी मोर अलर्ट देन इन दैट केस. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर आई वांट टू प्लीज,
whenever we consider income, income generation has to be made. Why computation of income is an important exercise? Like most of the Indian has got household kitchen and cooking throughout year. Exceptions are there for outing, yes or not? Whereas a good number of countries are there which has got food outside, where they eat the food outside. Resultant is because of their own limitations, choice, patterns, social behavior, nature, whatever it could be. I do not want to enter into that. But now what happens, we have got millions of houses who keep on cooking morning and evening, but that is a non-economic activity because it is not meant for sales. प्रोडक्शन तो हो रहा है ना, खाना तो बन रहा है ना, फिर भी उसको काउंट नहीं करते। जबकि यही दूसरी कंट्री में क्या होता है कि जहां वो जनरली मैक्सिमम आउटसाइड करते हैं, रिजल्ट क्या हो जाता है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट गेट कंसीडर्ड। कुछ प्लेस पे तो डेवलप्ड प्लेस पे देखोगे हर गली में रेस्टोरेंट है। दे डोंट कुक नॉर्मली द हाउस, दे गो आउटसाइड टू फूड बिकॉज दे डोंट हैव अ टाइम, दे डोंट हैव अ टाइम। रिजल्टेंट क्या हुआ, खाना तो आप खा ही रहे हो, तो हमारे क्या होता है कि इसका मतलब इनकम अंडर रिपोर्टिंग है। ये मेरी फीलिंग है, एग्जाम में मत लिखना वरना आंसर कट जाएगा, फिर मुझे बोलोगे सर आपने बताया था। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लिमिटेशन ऑफ द इनकम काउंटिंग। वी ड्राइव, खैर ड्राइविंग तो आज के डेट में नॉन अफोर्डेबिलिटी के कारण रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी सेल्फ ड्राइविंग है। बट अगर मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ और ड्राइव करके आ रहा हूँ, अगर सपोज करो 15,000 रुपीज़ अगर मैं ड्राइवर को देता एक महीने का, तो 15,000 तो मेरे पास ऐसे ही बच रहा है। लेकिन सर्विस तो प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, I am doing that service. If I am teaching my own child, instead of sending for tuition, I am teaching my own child, that is also. So these are the way when you start talking about, these are the limitations of, or these are the, you can say, I don't call it demerits, but certainly it is a limitation of income counting. So what income is going to be considered? Only those income which is meant for generation of income, same activity. So accordingly, three methods are there. Method number one, income method, second number expenditure method, and third number value added method. आप तीनों को ऐड करें, your income will be available. I am not going beyond this right now because some of the terms which you are required, I will request you to jot down those three terms and various variety, and that will help you to make your points clear. One is called your GDP, another is called GNP, GDP further will got NDP, then it will got NNP, and two aspects are there, factor cost and market price. All the four terms could be working on factor cost and market price. These are the only different exercises are there, right. Factor cost, market price. How many terms we have used? Four terms: GDP, GNP, NDP, NNP. And by starting from one, you can reach to anyone, and you can calculate anyone, right. A question is here, which one is national income? At FC. Very good. NNP at FC is the national income. But what we talk actually more in the frequent day-to-day time? GDP. Why so? Why GDP is important? And whereas actual definition of national income is NNP. अब देखो ना वो G है ना वो D है, फिर भी national income कह रहे हो. So what is the definition? How it is going to be made and why it is so? Just a practical question. Is it clear? This is यही practical बन गया. आप लोग सबको confidence होगा, आपको सबका definition मालूम है. Yes or not? Factor cost और market price में क्या है? Factor cost plus indirect taxes minus subsidy is called market price. Right? G और N के बीच में क्या difference है? Minus depreciation. D और N के बीच में क्या है? Net factor income from abroad. यही था ना.
साफ सेक्टर लेते चलिए, बन गया डेफिनेशन सबका इक्वेशन आराम से, चाहो मैट्रिक्स जहां से पहुंचना चाहो 2 मिनट लगा. बट $1,000,000 क्वेश्चन इज व्हाई जीडीपी इज इंपॉर्टेंट. GDP is domestic income and that income is produced within the territory of the country. Very good, within the territory. Actually, for economic development, it is not important whether American is producing or German is producing or Indian is producing. If it is produced in India by anyone, I am happy. नौकरी तो मिलेगी ना. अब एप्पल अगर अपना प्लांट लगा रहा है यहाँ, तो बाद में तो ठीक है ना. पहले अभी क्या डिफरेंस देखो, समझने की कोशिश करो जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आपको. सपोज यू बाय हाई प्राइस्ड मोबाइल हैंडसेट, जो अभी ग्लोबल नंबर 1 ब्रांड एप्पल का आप ले रहे हो, 1,00,000 रुपये का एक प्रोडक्ट है, राइट. इंपोर्टेड है, आया है, ताइवान में बना हो, चाइना में बना हो, यूएस में बना हो, कहाँ बना है मुझे लेना देना नहीं है, वो इंडिया में नहीं बना है. आई एम कंसर्न विद दैट ओनली इंडियन बाउंड्री. सो समवेयर इट हैज बीन देयर एंड वी आर बाइंग 1,00,000 रुपीज़. और अभी तो वो 14 वाला तो 1,25,00,000 और 1,50,000 के आसपास का प्राइस है, 148 के आसपास का प्रो है, राइट. आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, यू बॉट दैट only the tax portion and little bit whatever the dealer's margin is there in your India, which may be, मैं कहता हूँ चलो आप उसमें 48,000 में 28,000 आपके इंडिया में या 30,000 इंडिया में रह गया, बाद बाकी सारा अमाउंट कहाँ चला गया, बाहर चला गया. इट इज़ अ ड्रेनेज ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड. लेबर का खर्च, मटेरियल का खर्च, रेंटल खर्च, सारे खर्च जो है उसका कहीं और हो रहा है, वहाँ पे कर रहा है. क्लियर. ओनली टैक्स एंड सम डीलर्स कंट्रीब्यूशन, डीलर्स शेयर्स इज गोइंग टू गेट पार्ट हियर. नाउ व्हाट हैपेंस, वी रिक्वेस्टेड. देखो अब एप्पल का ऐसा है कि वो जूठा सेब तो हम अभी फ़िलहाल बना नहीं सकते, तो जूठे सेब वाले को ही बुला लो, ठीक है ना. बाइटन एप्पल ही तो है ना, वो फुल एप्पल तो है नहीं. तो अब उसको बुला लिया, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इन इंडिया. आपने उनको नोएडा में, गुड़गांव में, बेंगलुरु में, कहीं भी आपने उनको प्लांट खोलने का इजाज़त दे दिया. अब अगर वो, एक तो पहली बात है 1,48,000 से प्राइस अपने आप नीचे आ जाएगा. फिलहाल मैं मान के सेम अमाउंट लेके चल रहा हूँ 148. अगर 148 में 24,000 या इवन 30,000 40,000 रुपीज़ अगर प्रॉफिट होगा, सिर्फ वो प्रॉफिट पोर्शन अब बाहर जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा. लेबर पेमेंट यहाँ होगा, रेंटल पेमेंट यहाँ होगा, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ होगा, सारा जितना एक्टिविटी यहाँ होगा, और हम आप जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ मिलेगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू ब्रिंग इनटू दिस एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी इज मेड. तो इसका मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हमारी कंट्री बाउंड्री में है वो इम्पॉर्टेंट, न कि बाहर प्रोड्यूस होकर हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए इस चारों फिगर में जीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज ग्रॉस? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज दिस. डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली इट इज अ टाइमली wear and tear out. Ultimately it is not wear and tear out, it is a natural process. What is important is actually how much you are producing. नेट इफेक्ट क्या होता है उससे मतलब नहीं है मुझे तो ग्रॉस इफेक्ट से मतलब है आप प्रोड्यूस कितना कर रहे हो. इसीलिए ग्रॉस, इसीलिए डोमेस्टिक. हाँ थोड़ा फर्क पड़ता है अगर सारे बाहर ले जाने लगे. एंड व्हेन एवरीबडी इज ट्राइंग टू रिपैट्रिएट, तो रिपैट्रिएशन फार्मूला इज देयर. यू विल स्टडी इन योर सेमेस्टर 6 व्हेन यू विल स्टडी इंटरनेशनल फाइनेंस कि कहाँ कितना परमिशन है. अभी इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये बेस इंपॉर्टेंट होगा. अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट विल कम वंस अपीयर इन इंटरनेशनल फाइनेंस विद एप्लीकेशन, राइट. तो सेकेंड से 6 तक, 6 सेमेस्टर कब आएगा? 2 साल के बाद. अभी तो सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है ना, तो वहाँ उस समय आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी. एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. सो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट, हाउ यू आर गोइंग टू ब्रिंग, एंड then slowly can it be possible we can make a joint venture? Because कब तक हम उनके टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेंगे? क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर could be a part of agreement. We are providing you market, you provide us technology. Tomorrow we will be working together. Let's have a partnership. Entire paper you have got dedicated to this called merger and acquisitions and joint ventures. Semester 5th or 6th somewhere.
ये मैं आपको इसलिए ग्लिम्स करता चला रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें वहाँ आके उभरेंगी, सामने आएगा. हाउ यू विल बी स्टडिंग, how that alliance could be there. Government may think of not allow 100% to them, so that our partner will be there. Maybe sometime a strategically very important sector. Example is in insurance sector in India. When in 99 insurance sector got opened, insurance sector is a service sector. Please listen carefully. Insurance sector is a service sector. In service sector what happened? When it opened for three. First, any bank can enter into insurance sector. Earlier it was only insurance was there, 1 LIC and 4 GICs, okay? National Insurance, Oriental Insurance, United Insurance kind, 4 general insurance and 1 life insurance. 99 when it opened, first regulatory was required, IRDA came and they opened. So, banker were allowed to come in, private company were allowed to come in and foreign insurance player were allowed to come in. Then a question came, ki, will you be allowing foreign insurance company to come in and play 100%? And after lot of brainstorming, it got decided ki no, this 100% permission should not be there. So, they allowed only 26% to them. This is what one very interesting topic is there, and that topic is also a part of your present syllabus as well. And of course, continuously you will keep on studying in coming days in finance, that is called FDI, foreign direct investment, how much it is going to come. And that foreign direct investment, it was set only up to 26%. कितना परमिशन दिया उनको इंश्योरेंस सेक्टर को? 26%. So now they were giant company in respective country and big company in the world like your AIG, like Prudentials, like Lombard, okay, like Allianz, everyone. But when they came in India, they can't have 100%, means they can't have the complete 1 rupee with them. So they require Indian partner, and that's why you find out either with banker or with the private sector, they made a partnership. So when AIG came, they joined hand with whom? Which Indian partner? Tata AIG, very good. And Allianz with whom? Bajaj. Prudential with whom? ICICI. Now you all know. Why it was? Because they can't have, they were not allowed. Legislative compliances said you have to be there. Now they have been permitted for 49%. More investment can come because they have been established for 2 decades now, tested, and now government says ki fine, you can come, you can have that investment. FDI ceiling is going to get increased. So आपसे अगर FDI पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा what is FDI and it's how it is transforming the Indian economy, that could be a question. That's the way you have to prepare. So these are the components. You will find out entire syllabus if you minutely observe. I will give you a simple road map of the preparation. First, you start from chapter 1 to chapter n in a glance through. Don't wait that your classes will come and then you will have all Sundays classes. All Sundays irrespective of that, initially 2 hours, maybe after that again I will convert to 1 hour. Okay. Because I wanted to give you maximum, that is why I made it 2 hours. Second, when you start reading it, you go through, glance through one complete picture. ये कैसे पढ़ना है? जैसे आप एलिफेंट पढ़ रहे हो तो पूरा एलिफेंट एक व्यू देख लिए, ये एलिफेंट है. उसके बाद आप पिसमिल अप्रोच में पार्ट वाइज डिटेल में आप पढ़ो, सो दैट यू हैव ए कनेक्ट. मैंने तो आपको पूरा का पूरा BBFI प्रोग्राम तक कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि किस सेमेस्टर में जाके क्या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी एंड हाउ इट इज गोइंग टू गेट कनेक्टेड, सो दैट यू नो दैट यस इट विल कम आफ्टरवर्ड. You require at that point of time. An ultimate objective is for a final decision. See, business decision is a ultimate decision making process which require information from all the sources. ये ATP की तरह है. ATP समझते हो एनर्जी का यूनिट होता है, अगर बायोलॉजी में पढ़े होगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है. और ये क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं ना अल्टीमेटली उस एनर्जी में कन्वर्ट करता है. स्ट्रेंथ में ये नहीं होता है कि ये वाला मेरा वेजिटेबल का स्ट्रेंथ है, ये पल्स का स्ट्रेंथ है,
बैक में मेरा चपाती का स्ट्रेंथ है, ब्रेन में राइस का स्ट्रेंथ है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो कंप्लीट जोशी होता है। उसी तरह सब्जेक्ट जब पढ़ लेते हैं तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज अ सिंगल डिसीजन। व्हेन एट द नीक ऑफ टाइम, key time, when you take a decision, it may be coming from the all subjects you have studied effectively, right? So your question, and otherwise we will wind up the things. Pseudo sector क्या होता है? Pseudo sector is basically a sector which is not itself a sector, but it is trying to represent a sector. That is a pseudo sector. So it will be something like it could be considered as a proxy sector also. It is a proxy in nature. तो अपने आप पे वो कोई सेक्टर नहीं है, लेकिन वो सेक्टर क्रिएट होता चला जा रहा है, और आज के डेट में ओवरलैपिंग में ये बहुत बड़ा सेक्टर बनता चला जा रहा है। सर्विस कुछ और प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन वो हट के कुछ और हो रहा है। दैट्स द वे इट इज डिसाइडेड। एनी अदर क्वेश्चन? No question. So then in that case, what I'll submit to you that one by one, chapter by chapter, it will be there. I think 2 units I will take myself, because I'll more get exhausted somewhere else, but still balance of payment and income I'll try to explain you. Rest chapters will be taken by another faculty, and you have to cover in entirety. This subject is your backbone of your finance, and whatsoever material has been given, though I am responsible for that material's quality, but still I say that no material can provide you my third dimension, which is dynamic in nature, which keep on changing. So you must have a habit of reading it regular, and various sources are there. Third important thing, jot down 3 important sources of information which you should gather. One is called RBI website. www.rbi.org.in is the RBI website. You collect information from there. You will find out macroeconomic parameters available. Someday in next class I will show you, when I will open my laptop, I will show you how these are going to be used, how you should study. And next to that, second one is for international level, global level, IMF website you must go through, imf.org.in. Okay. IMF website is also there. And third important website which is related to economic activity, which is there, is a government website, especially where your fiscal policy and government policies will come into picture. अभी आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, I can understand, to appreciate and understand and relate it the way I gave you an illustration कि how just by changing one small policy decision related to bamboo stick, an entire economy got a favor. Until unless you have that connect and that explanation, you will not be able to understand which policy has got what kind of impact, how it is going to make a change. Why it is required, last segment of the talk, is if you understand macroeconomic happenings, then you look into a company which is performing and you will bet on this company, this will perform better. And when you bet on the company, this will perform better, that will take you to the entire study of a stock market. अभी यही कन्फ्यूजन है ना, हाउ मच इज देयर इज द राइट वैल्यू. तो आपको इकोनॉमिक हैपनिंग से, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई, इस पॉलिसी से कौन ज़्यादा फायदा उठाएगा, किस इंडस्ट्री के फेवर में है, और उस इंडस्ट्री में कौन ज़्यादा प्लेयर है. अभी देखो, अभी लोग पूरी की पूरी जो पिछले 24 जनवरी ऑनवर्ड जो हंगामा खड़ा हुआ, 24 जनवरी के शाम में इंडियन टाइमिंग में जब हिंडनबर्ग ने अपना रिपोर्ट दिया, अननेसेसरली फस क्रिएट किया, जबकि उसमें कोई दम नहीं है फिर भी, और वो फस क्रिएट करके कहा कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कंपनी का वैल्यू आउट है, एंड सडनली शॉक से कंपनी का प्राइस नीचे गिरा, एंड अगेन within 10 days of time again price started moving up. I went to normal back. And what is the stock market? It is the reaction of a collective measure of all the people. It has to do nothing who said what and how parliament is going to take care of that thing, because we investor, we know where we are going to get better money, and it has been decided accordingly. But still, instead of having a hearsays on or others tip, why not you yourself can decide, and ultimately you are going to be financial analyst. Ultimate objective तो वही है आपका.
तो कौन सा मार्केट, अगर मैं आपसे अब इस पढ़ने का एक्चुअल एग्जाम कब आप अच्छा समझो कि आप सही सीखे, व्हेन यू आर समवेयर इन योर फैमिली फंक्शन एंड जब प्राउडली आपके पेरेंट्स आपको इंट्रोड्यूस करें अपने डिस्टेंट रिलेटिव से, और उसके बाद वो बोले कि बेटा ये बताओ कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ और कहाँ बेटर रिटर्न मिलेगा, वो आपकी एक्चुअल लर्निंग होगी, वहाँ आपका एक्चुअल एग्ज़ाम है, टेस्ट है। या आपके पेरेंट्स ही पूछ दिए कि अच्छा मेरे पास इतना है, वेयर आई शुड पार्क, मैं तो अभी तक एफडी से बाहर सोचा ही नहीं। क्या आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि किस इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए? या आप भी औरों की तरह राह चलते हैं, सर म्यूचुअल फंड में लगा दो, ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो। मैं पूछूं कि व्हाट शुड बी द योर इंट्रिंसिक वैल्यू, हाउ मच शुड बी योर टारगेट प्राइस एंड वेयर आई शुड यूज माई स्टॉप लॉस, वेयर आई शुड कम आउट, कब मुझे बेच देना चाहिए, मुझे बता तो दो। या मैं बास्केट बनाऊं, पोर्टफोलियो बनाऊं, तो किस किस को यूज करूं? मैं 2 साल के लिए सोच रहा हूँ, 5 साल के लिए सोच रहा हूँ, तो मेरा क्या पोर्टफोलियो बनेगा? जब ये आपकी कैपेबिलिटी बनने लगे तब समझ लेना कि आपका एग्ज़ाम के रिजल्ट से वो स्यूडो सेक्टर होगा, स्यूडो रिजल्ट होगा, वो सिर्फ पासिंग है, सर्टिफिकेशन है। बट एक्चुअल, एंड वंस यू विल हैव दैट वन, दिस विच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज़ वेरी रेयरेस्ट इन द part. And as a chartered financial analyst, CFA, I am expecting from you. That's what my, you know CFA? So I expect from you all, you can do it and you can make it, right? So thank you, thanks a lot. We are stopping here, and we will look into that how it is going to get completed. Call to switch off. Call कर लो बंद करने के लिए. कॉल कर लो बंद करने के लिए ऑन है, वरना रिकॉर्डिंग में जाता रहेगा. वट एवर विल कॉल फ्रॉम आउटसाइड. Yes, what is your question? Third, I said government website, I said na, Government of India website related to Ministry of Finance, you can nic.in. Second one, IMF, RBI and IMF. RBI will give you the complete thing for India. IMF will give you global one. You can look India also in the global. When you want to compare your India with rest of the world, you can get it through IMF. International Monetary Fund. Okay. Any other question? In the meantime, I am in the class, you can ask the question.